Assalamualaikum everyone. Welcome to Pakistan Stock Exchange webinar series. Before I start my session, मैं कुछ basic rules के ऊपर बात करना चाहूँगी. Number one, if anybody has any questions, we will. Why don't you please put it in the message option जो दिया हुआ होता है यहाँ screen पे. So once I'm done, I will address your questions and respond to them. Number two, once we go through these sessions, उसके बाद भी अगर आपके कोई questions हैं, we'll be taking them through email also. Okay, we have about 19 participants. Today we'll be talking about, abhi tak we've held quite a few webinars in the last few years at PSX, but ज़्यादातर इनके webinars हमारे जो थे were focusing on investor side. This is the first time we're talking about listing, or how companies, this is especially for companies and businesses where you have a challenge of raising capital. जब आप business में होते हैं तो सबसे basic चीज होती है to have that money, to have funds to set it up, to run your business effectively, to manage the working capital, to manage the cash flows, to hire people. And once you've started नया startup के अंदर तो आपको initial seed capital चाहिए होता है, but once you're even in the running, you want to expand your business. There are various reasons why companies need money. So today's webinar will be focused on that and what is the role that PSX can play for all of you in your quest for capital. So हम इसमें financing options को cover करेंगे. ये content पेज के अंदर हमने जिन एरियाज को हम कवर करेंगे वो लिस्ट किए हुए हैं. लिस्टिंग कैसे होती है PSX पे, what types of listing options are available for the companies and businesses, benefits क्या है listing के through capital raise करने के. If you there are various ways of listing of raising capital, but what are the benefits of raising capital through listing? This is one other subject that we'll cover today. Then बहुत सारी myths हैं which in our interaction over the years with different companies, with different CFOs, we've come across these concerns that people have that from the perspective of listing their company on the exchange. उन myths को हम डिस्कस करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशंस भी आपको देंगे. फिर हम डेट को कवर करेंगे क्योंकि डेट सिक्योरिटीज आर आल्सो मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल. एंड लास्ट वील टॉक अबाउट के जो अगर आप व्हेन यू आर रेडी टू कम एंड लिस्ट ऑन द एक्सचेंज, व्हाट आर द वेरियस स्टेक होल्डर्स और उनके क्या रोल्स होते हैं, आपको किन एंटिटीज के साथ काम करना होगा टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग. आई विल बिगिन. सबसे पहले तो हम इस चीज को देखेंगे कि फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस क्या होती हैं. You want to expand your business, you have a factory, you want to enhance your factory, you want to add a warehouse. आपने different अपनी geographic locations में आपने different warehouses बनाने हैं, आपने अपनी workforce को manage करना है, increase करना है workforce, आपकी working capital की requirements बढ़ जाती हैं. For example, a lot of times you have increased orders and you need extra money to procure more goods, and by the time you manufacture and export or deliver your goods, you get your payments by that time once you've delivered. So initially आपको working capital की requirements होती हैं. Other than that, you have loans from banks because different ways of capital financing की बात की जाती है, तो बैंक लोन्स भी आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं बैंक लोन्स. सो उन लोन्स को पे ऑफ करना, दैट्स वन थिंग. द अदर थिंग इज टू सर्विस दैट डेट. वो लोन्स की सर्विसिंग थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट्स भी एक खर्चा है, विच इज अ फाइनेंशियल एंगल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. Then you want to invest in an R&D. You want to work on a different line of business you want to go into diversification. You need to spend money on R&D. So these are various facets of expense that any organization or business looks at.
अब आ जाते हैं what are the options available for financing. When you talk about options available, there is no one clear cut solution for any organization. So ऐसा नहीं होता कि जी आपने सिर्फ बैंक लोन से काम करना है, या ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ लिस्टिंग में से जितना कैपिटल रेज करना था, you've done that and that's it. You always, every organization has its unique features, unique requirements, which with the different combination you can make it work for yourself. I will talk about what are the various options that are available. जब आप आते हैं तो सबसे easy होता है बैंक लोन. बैंक loans में बहुत बड़ी organization जाती हैं and they leverage themselves, they take loans and then they have to pay that loans. A lot of times, in fact most of the times, banks के पास जब आप loan पे लेने जाते हैं तो you have to put in some sort of collateral. You have to, because the bank has a risk when they give out a lot of money to your company, they will take either in your business property, your machinery, your any asset that could work as a collateralized asset, the bank will take from you and then disburse the amount. So in addition to that collateral, you also have to pay off that debt. You have to pay the payments, the interest payments, जो कि generally monthly या quarterly दी जाती हैं. So that is, I will cover the pros and cons of each investment vehicle. Then आ जाते हैं angel investing के ऊपर. Smaller companies, SMEs, they also start off, or once they're in a developing phase, they go and opt for angel investing. Now, finding an angel investor, somebody who has that faith in your business, who looks at your business and believes in your profitability models, in your projections, is a little difficult to do. And again, when you go for angel investing, you give up a share of your business also. Third, I will talk about private equity, which is today one of the, for the new growth enterprises, the new startups, the medium-sized businesses and small businesses, which is, it is actually picking up and is there and available in Pakistan also. So in private equity, what the equity investor does is they make a they make a combination of debt and equity to invest in your company. So yes, they do take significant amounts of debt. Again, they do take a shareholding in your company, which is one or two parties actually investing in your company and taking a larger pie or percentage. So it could be like 40-60%, it could be 49-51%. So that way you are giving out quite a large share of your company. A private equity investor can also reshuffle and restructure your company. Then is partnership. Partnership may be, there are certain challenges. Yes, it's very good to work with partners and you get investments. You have various types of partnerships. They active partners hote hain. Sometimes you have partners who just give you the money and then they let you manage. However, they do have a say in your business, in how you're conducting the business, and you obviously share profits and with your partners in the percentage that you have decided, or in the percentage that the holding of the company is. So there's dilution of the management control, so you're not the sole decision maker, or you're and there is sharing of capital. Enter when we talk about the exchange. So Pakistan Stock Exchange is also another alternative, and in my opinion, a better way of raising funds for your company. You come to the exchange, you list your company with the stock exchange, and that way you raise capital. Achha. When you come and raise capital from the stock exchange, you are actually not diluting your business. What you're doing is you are getting multiple
investors, which is from the general public. So there could be 500 investors in your company. There could be like 1,500 investors from your company in your company, and you will be giving about 20 to 25% share of your company out, which is given out as shares of your company to multiple stakeholders, which is from the general public. This is a cost-effective method of raising capital because A, you do not have to pay interest every month. At the end of the year, whatever money, whatever profits you've made, you will share part of that profit as a dividend with the shareholders. You can reinvest the rest of the earning or profits back into the company as well. In the first year also, if you haven't made any profit, there is no liability or obligation on the company to disburse dividends. So you could reinvest your profits, or you could say that, you know, this is the initial first 2 years and we need to reinvest, and we haven't made, we're at a break-even level and we haven't really made profit. So that is one thing. The other thing, you once you're listed on the exchange, you are following certain basic criteria for listing, which makes your company efficient, which makes your company more transparent and more regulated. A positive of that is that you will have a proper structure, you will have a proper CEO in place, you will have a board of directors. And once you have these board of directors and this kind of structure in place, it helps your company grow better. You can take your company from one level of from one generation to the other. Normally, listed companies move across generations very successfully because they have proper structures in place. That is a positive. You have a proper CEO who has a certain JD or a job description, who that person, it doesn't necessarily have to be part of the family. So that, and the family members can be part of the board and the governing body. Stock exchange, what I'll do is run a little bit information about this Pakistan Stock Exchange. Which was established back in, वैसे तो बहुत पहले established हुआ था, KSE था, but in 2016 January there was Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange, Islamabad Stock Exchange. All three stock exchanges were merged into one, a national stock exchange called Pakistan Stock Exchange. That happened in 2016. Karachi Stock Exchange had been there since 1947, Lahore Stock Exchange since 1970. And ISE, that is Islamabad Stock Exchange, it was established in 1992. PSX Stock Exchange के बारे में बहुत सारी information available है. We keep hearing, we have a record of being amongst the best performing markets in Asia. इस वक्त Pakistan Stock Exchange की जो शेयर होल्डिंग है उसके अंदर अबाउट 40% चाइनीज कंसोर्शियम की इन्वेस्टमेंट है और शेयर होल्डिंग है, एंड 60% बाय जनरल पब्लिक. आउट ऑफ दिस 60%, 20% इज विद द public and 40% is with all the local initial shareholders of the stock exchange. थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं तो we talk about listing. जब हम बात करते हैं लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं. लिस्टिंग, इक्विटी की लिस्टिंग होती है जिसमें 2-3 हमारे डिफरेंट बोर्ड्स हैं. इक्विटी लिस्टिंग का मतलब ये है कि आप, व्हेन अ कंपनी कम्स टू द स्टॉक एक्सचेंज, दे रेज मनी, दे गिव आउट देयर शेयर्स थ्रू एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या के थ्रू वो अपने शेयर्स अवेलेबल करते हैं. सब्सक्राइबर्स ऑप्ट और शेयर होल्डर्स गेट दोज शेयर्स, एंड लेटर ऑन देयर इज अ secondary market that is formed when these initial shareholders can buy more or sell their own holding IPO के बाद. So IPO is the primary market and secondary market is the जो आप बाद में within the shareholders trading होती है stock exchange के ऊपर. अच्छा, अब आ जाएं
विद इन एक्विटी इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि मेन बोर्ड क्या है, जेम बोर्ड क्या है और रीट क्या है. इस वक्त मैं सिर्फ समराइज कर रही हूँ. सो देन द अदर ऑप्शन इज डेट सिक्योरिटी. डेट सिक्योरिटी इसका मतलब ये है कि आप बॉन्ड्स इशू करें, आप टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स इशू करें, या डिफरेंट किस्म का डेट इशू करें, वेयर कंपनीज और इंडिविजुअल्स कैन कम एंड इन्वेस्ट and they earn a certain interest or profit payment out of that security, and at the end you return that. So there are two types of debts. एक public placement debt होता है और एक one is private debt. Private debt वो होता है जो certain entities के लिए open होता है, बहुत ही select किस्म के companies. For example इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे थ्रू बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म इस वक्त एनर्जी सुकूक 200 बिलियन का एनर्जी सुकूक का डेट लिस्ट, सुकूक इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, उसकी लिस्टिंग हो रही है. बुक बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है इस हफ्ते. एंड इसके अंदर ये 10 ईयर का बॉन्ड है जिसके अंदर एनर्जी कंपनी PHL जो है पाकिस्तान पावर होल्डिंग कंपनी है, वो दे रेजिंग मनी, they will pay the investors a certain amount of profit out of the money for their investment, and it's a 10-year bond. After 10 years the bond is it's mature हो जाता है bond या investment mature हो जाती है. So this is debt. Debt के अंदर again public debt वो होता है जिसमें आपने एक दफा ले लिया, उसके बाद आप liquidate भी कर सकते हैं. You can keep buying on and selling on the stock exchange. And private placement is when it is not available for public transactions. Other instruments में जो available हैं वो ये तो investment instruments हैं, इनमें derivatives हैं, exchange traded funds हैं. This is again a new instrument, but this is not directly related to listings. And there is mutual funds. Next के अंदर आते हैं तो equity market. Equity market, as I said, it's the stock market in itself. If आज अगर आप stock market पे market summary पे जाके देखते हैं तो आप मुख्तलिफ companies के shares देख रहे होते हैं, उनकी transactions देख रहे होते हैं, आप उनके नाम देखते हैं. इस वक्त there are about 530 companies which are listed on the stock exchange. These companies have come to the stock exchange, given out their shares. Their shares are available in the market. Multiple shareholders at any point every day are buying and selling their shares. Some people invest for a longer term, some people invest for a shorter term. But the company is listed, they came through an IPO, they raised capital, they raised equity, and they floated their shares in the market. इस वक्त out of these 530 companies जो मुख्तलिफ sectors में हमने अगर categorize किया हुआ है, that is we have about 36 industrial sectors जिसमें आपके सीमेंट आ जाते हैं, पावर आ जाती है, एनर्जी कंपनीज आ जाती हैं, ऑयल एंड गैस आ जाती है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आ जाती है, देयर इज ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज टेक्सटाइल्स, देयर इज वोवन टेक्सटाइल्स, देयर इज फार्मास्यूटिकल्स, देयर इज फूड. सो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर different companies की listing है. So each category has multiple companies which are listed. जिनकी as of 24th April total market value या market capitalization was 6.1 trillion. अच्छा, market capitalization का figure is a figure that keeps changing every day because of the prices of the stocks and shares traded. As they change, the market capitalization changes. Market capitalization in very simple terms is at any point, at any day, beginning or at the end of the day, how many shares of how many companies were available in the market at what price. उस particular figure को market capitalization कहते हैं. अच्छा, अब आ जाए Stock Exchange 100 Index. KSE 100 Index, basically जब when companies come and list on the exchange, फिर उनकी over the years एक performance होती है और मुख्तलिफ indices बनाए जाते हैं. KSE 100 Index is one of the 7 indices, in fact 9 indices जो कि stock exchange पे 9 indices मौजूद हैं. इन 9 में से जो KSE 100 index है, it comprises of the top 100 companies of the stock exchange. This KSE 100 index is followed by
international fund managers, it is followed by Bloomberg, it is followed by different investors, foreign investors, local market to see, and is seen as a gauge of the performance of the stock market, of Pakistan Stock Exchange. So जो कंपनीज, जो 100 कंपनीज इस KSE 100 इंडेक्स में आती हैं, वो बहुत ही टॉप की 100 कंसिडर की जाती हैं. And this 100 index was the world's best performing index over the last 1 year and over the last 5-year periods, if you actually look at that statistics. Further down, अब हम explain करते हैं आपको कि क्या-क्या options हैं within equity investing. When you come to list on the stock exchange, so you have a main board. Main board पे इस वक्त हमारी 500 से ऊपर companies listed हैं. And these are available for the public to transact. Any small investor, any large investor can come and buy shares of these companies and hold them. They can transact, they can avail and get the benefit of the dividends also. Companies जिनका minimum post issue paid up capital, एक figure होता है which is called the paid up capital of a company. When you decide to list on the stock exchange and raise money, and if you have a minimum post issue, मतलब आपने जब अपना IPO कर लिया, अपने shares issue कर दिए market में, उसके बाद minimum base अगर आपका 200 million को touch कर गया है PKR में, that means you will be eligible for listing on the main board. So 200 million post issue paid up capital pay and above. I mean, there are companies who go to 800 million post issue capital. There are companies who go into billions also. So minimum uska floor is 200 million. So they can come and apply for listing on the main board of the stock exchange. Once you come to the stock exchange to list, you need to have your financial statements in place. You have to publish them on your website. In short, corporate governance की जो requirements हैं, वो आपको follow करनी होती हैं to maintain this status. This is the this is what you have to be to fulfill these requirements in order to be eligible to list and to raise this comparatively low cost equity funding. You have to be in business for at least 3 years, and out of these 3 years, last 2 years में आपके profitability होनी चाहिए. इसके अलावा और भी बहुत सारी detailed requirements होती हैं, but ये in a nutshell main board की companies के लिए listing की requirement है. Achha, if you're a private company, if you're a sole proprietorship, if you're a partnership, in those cases, if you want to come and get listed on the stock exchange, सबसे पहले आपको अपनी status of your company change करनी होगी with SCCP. You will have to be registered as a public company. फिर आके आप list होते हैं, तो then you become a public listed company. So step 1 is, before listing, you need to be a publicly registered company. अब आ जाए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है इक्विटी लिस्टिंग में या इक्विटी उसके अंदर कैपिटल रेजिंग में, दैट इज द जेम बोर्ड. जेम स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड. ये अभी रिसेंट एडिशन है SCCP के साथ. वी वर्कड ऑन क्रिएटिंग दिस बोर्ड एंड वी रिसेंटली एडेड इट टू आवर लिस्ट ऑफ ऑफरिंग्स. This is targeted and this is specially created to facilitate smaller companies, the medium-sized companies, even startups can also come and opt to be listed on the GEM board. इसकी जो requirement है post issue paid up capital की is a minimum of 25 million. So अगर आपकी company का paid up capital 23 million पे है and post issue you will be touching 25 and you're looking to raise about 2 million, so you can actually, you'll be touching 25 million post issue, so you will be eligible to apply for listing on the GEM board. Okay, अच्छा अब आ जाएं इसकी requirements.
इस टाइप की कंपनीज में हर कोई छोटा इन्वेस्टर कैन नॉट कम एंड पार्टिसिपेट. There's a definition of eligible investors जिनकी एक net worth define की गई है. Minimum 2 million की net I think 2 million it is. I'll check that. 10 million है. There's an eligible investor की net worth होती है. These eligible investors are authorized to buy and sell the shares of companies जो आके GEM board में list करती हैं. इन कंपनीज को अच्छा जब जो कंपनीज मेन बोर्ड में आती हैं टू लिस्ट फॉर दे हैव टू क्रिएट अ prospectus and that prospectus is shared with the public before listing. So prospectus is required for the main board and an information memorandum is required for listing on the GEM board. जिस तरह मेन बोर्ड की कंपनीज को की रिक्वायरमेंट है टू क्रिएट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू हैव ऑडिटेड अकाउंट्स, periodic accounts, everything, and publish all of these on the website. Same goes for the GEM board. So all companies who come and apply for listing on the GEM board on the company website. These are the basic requirements. Why these stringent requirements when it comes to listing? Because when you come and list on the stock exchange, all sorts of investors, individuals, retails, corporates, companies, they come and buy shares of your company. These requirements make your company transparent and visible, because being an investor, an investor is, has the right to ask certain questions. They have the right to ask the company CFO regarding the company plans, regarding the new projections, how they're going to prepare their next year projections, and so on and so forth. That is why it is important to be available and visible to the shareholders and to the general public. The other reason, in fact, that is one of the very important reasons, when you're available and you're visible to the public, so you're not only visible to the national or the local Pakistani investors, you're also visible to the international investors. There are large funds, international funds, who would like to invest in your company. So instead of coming into the country and putting in a larger amount into your company and becoming a partner or a JV, joint venture partner for that matter, it is comparatively easier if you're visible, you're listed on the stock exchange, and that way international investors and fund managers can actually come and invest in your company that way. So you're channeling investment into your company. The more open your information, the more readily available your information is, the more you're following the corporate governance requirements, you're compliant to the regulatory requirements, the better it is for you to be able to attract investors, the better it is for you, because you're able to attract not only local investors but also international investors. So it's very important. There are benefits of being visible and transparent. Number 3 is for real estate. Now REIT is a real estate investment trust. It is for those developing projects, for those real estate entities or companies who actually have revenue yielding or income producing real estate. So people who buy real estate, they develop, they manage, they operate and sell it. For example, हमारे exchange पे इस वक्त Dolmen का REIT listed है. Now, what Dolmen's project is, they have shops, they have offices, they built a whole project, and then they get rent out of it. So it is an income producing real estate. Investors, individual investors can come, and जब IPO हुआ था Dolmen के REIT का, so individual investors
could come and invest in that real estate. So for example, somebody who doesn't have 5 crore rupees to go and buy a plot or to buy a house, they can invest in a REIT with a smaller amount and be part of that entire pool. कि जब profits आते हैं तो you will, जितनी आपकी investment है उस हिसाब से you get the profits also. So you reap a certain benefit. This works like a mutual fund investment, but when a REIT project comes to the exchange and applies for listing, they raise money, they build the project. So there's a certain time line there, they build the project, they give out the shares, and after the project is ready and starts to yield profits, that is when the investors also get their share. Next is, okay. Now I'll talk about what are the benefits of listing. कुछ तो cover किए हैं मैंने while I was talking about the types of listing, but जो main benefits हैं, सबसे major benefit ये है that you will be actually raising long-term, low-cost capital. Long-term because आपने 2 साल 3 साल बाद वापस नहीं करना पैसा. You've taken funds, you've raised the money, you've put it into your business, you don't have to pay it back to the investor. It's not like a bank loan that you have to pay after a certain tenure. So इसको long term money कहते हैं. Then low cost because you do not have to, and especially although interest rate, discount rate has reduced quite a lot from what it was a few months ago, 13% plus tha discount rate. And abhi 9% pe aa gaya hai. If we actually still look at it, it's 9% is also a little slightly on the higher side, whereby for a business, their working capital becomes choked. So, क्योंकि आपने हर महीने interest payments भी करनी होती हैं, and then eventually you do have to pay off the loan as well. With equity investing, it's a comparatively low cost because at the end of the year, you've made profits, you disburse it in the form of dividends. Certain companies do not give out dividends. They say we will reinvest our profits into the company and build more equity into the company. And that way, there is a chance of the price appreciation of the shares. So there are 2 ways that you can look at it. But it's in a nutshell, it's a low cost capital. When you get that money, you invest in new projects, you can diversify your business, and आप अपनी regular working capital requirements को भी meet कर सकते हैं. Right now it's such a time that in the last few years also we see there's been quite a lot of activity in the economy of our country, and I think it's a good time that businesses are looking at how they will remodel their business, or review their business models, and how will they reopen and start rollout of their businesses once we all open up. Achha, the other options, now we look at other benefits of listing. You get an opportunity to be included in one of the indices of the stock exchange. Now KSE all index है जो कि all share index है, उसमें all the 530 companies are visible and can be seen. Then there are Sharia compliant indexes जो companies stock exchange के ऊपर इस वक्त listed हैं. Out of those, there are about 226 companies that have that run their business in a Sharia compliant manner, and they have Sharia advisors on a regular basis. Their business models, their business methods, their financials are evaluated, and they are added back or added into the Sharia compliant index. So stock exchange के ऊपर वो companies भी हैं जो कि Sharia compliant हैं. So your Karachi Mizan index, KMI 30, ये top 30 companies का है, is Sharia compliant, and then there is the KMI all index जिसमें all 226 companies are available. KSE 100 index, that's there, which I mentioned. This is the benchmark index.
which is actually tracked by the major investors, local as well as international, and it's also tracked by the corporates. In fact, ये benchmark है. All the other companies, especially if you look at mutual funds, they benchmark their equity mutual funds against this index. Internationally भी stock exchange को जब evaluate किया जाता है, KSE 100 index को देखा जाता है. So once you're a listed company and you are compliant with the regulatory requirements, you're amongst the good performers, you have that opportunity of becoming part of that KSE 100 index. So, you know, that is also a good opportunity to get global recognition. दूसरे benefits, further, if we look at it, there is a possibility for a higher valuation. Once you go public, all the stakeholders, जो कि involved है इस process में और आपकी company में, they use fair valuation of the company, which is generally higher than the book value. Now, when you have a positive, when you're a listed company there and you're transparent, you're visible, so इसको मैं simply ये समझा सकती हूँ, अगर आपको real estate के साथ देखा जाए, एक होती है आपकी price और एक होती है value. So, you know, your company, if it's public, the stakeholders and how your company is following the business models, what kind of activities they're doing, अगर आप उस perspective से देखें तो there is a chance that you can get a higher valuation for your company. The other thing I would say is when you're a listed company and you have a certain performance track, that is when you get an opportunity to hire good resources, attract good resources. Because जब आप hire करने जाते हैं और आप अपनी HR team को कहते हैं कि हमें best accounts का बंदा ला दें, या we have to hire a CFO or we want to hire a salesperson for that matter. So जो companies known हैं और लोगों लोगों के word of mouth में जिनके बारे में अच्छी चीज है या visible होती हैं, तो they वहाँ लोग काम करना चाहते हैं. So you are able to like hire better resources, and if you're a listed company, listing के बाद आपकी company का profile भी enhance हो जाता है, public profile, from the point that you announce that you're considering to become to list your company. You talk to consultants, you talk to financial firms, auditors, and you start building a reputation for yourself. You will start looking at at corporate governance of your company. कि इस वक्त आप अपनी क्या follow कर रहे हैं, कहाँ areas for improvement हैं of each of your company's processes. और जब IPO होता है, prospectus बन के जब circulate होता है and people start talking about अच्छा इस company का IPO आ रहा है, oh अच्छा. Up until now, maybe nobody had heard your name, or except those जिनसे आपका, if you're a B2B business, यानी अगर आप retail market में नहीं काम करते और आप businesses को वो करते हैं, so probably your company is not known. Advertising की जरूरत नहीं है क्योंकि retail market अगर नहीं है आपकी. So when IPO होता है, तो that is the point where your brand identity and recognition starts, and you become a household name by that time. लोग कंपनी के बारे में पूछते हैं, फिर मीडिया का इंटरेस्ट होता है, discussions हो रहे होते हैं, and then your company name becomes has a positive public profile, and that way and अगर आप अपने sectors में over time after listing you've performed well, you've shared profits, you've given out good dividends, there is a positive association with your company name, you can automatically be termed as industry leader within your respective sector also. एक और चीज है, listed companies get the benefit of tax credit. Now this is also a very important वो, especially आज के ज़माने में जहाँ आपने थोड़ा सा benefit लिया on tax, that can be added as your bottom line. जिस साल आप listing करते हैं तो उसके first 2 years में आपको 20%
टैक्स पेबल में आपको क्रेडिट मिलता है, एंड दैट इज year 1 20%, year 2 20%, and then year 3 and year 4 में 10% again आपको further tax credit की probability है, probability नहीं, it's available, the tax credit. अच्छा, अब आ जाए improve relations with bankers and suppliers. When you're a listed company, so banks भी आपके साथ काम करने में comparatively ज़्यादा comfortable होते हैं, because normally if you go to a bank and say, oh, I want a loan and I would like to apply for a business loan or you know, structure a corporate finance deal or something, कंपनी की रेटिंग पूछी जाती है, बहुत सारी चीजें, कंपनी की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, शेयर होल्डर्स के बारे में पूछा जाता है. बट इफ यूर ए लिस्टेड कंपनी, तो they all know, from your suppliers to your bankers, they all know that you have covered a basic level of due diligence by becoming listed. By being listed, you are already fulfilling certain requirements of compliance, of regulation, of financial disclosures, and audited accounts and financial statements are all being complied with. So that helps you create a positive, matlab jab in initial interaction start hota hai, that is when you actually begin on the right footing, and then it can be carried on further. Next, in terms of business continuity and succession planning, now that is a major concern. In a one-man show, the concern is generally, okay, if the CEO or the owner or the founder of the company, you know, wants to retire, what option does he have? Children? What if the children are not interested or not competent or not eligible for taking that seat? In a listed company, you have proper structures, board of directors, CEO, requirements, everything in place to ensure that there is a proper transformation कह लें, या transition from one generation to the other, and that is a way that businesses actually survive over the years, over generations. And business continuity processes. जब आपके पास एक board होता है, various board committees होती हैं, HR committee होती है, risk committee होती है, you have new business development committee, you have IT steering committee, you have audit committee. All these committees ensure that proper measures are in place to avoid any catastrophe, to avoid any business discontinuation in business, to avoid any, to prepare, to मतलब अपने backup plans prepare रखें for any disaster that you can face, whether it's business, whether it's environment, whether it's IT, whether it's change of methods of doing business. So when these committees and these top management sit on a table, they get opportunity to discuss. They look at the revenue streams, they look at the projections, they question the business modeling, and that adds to the, and जिसको कह लें कि जी everybody brings their own level of expertise to the table, and they add to they improve the plans. अब मैं बात करूंगी, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट वी विल टेक देम थोड़े देर बाद. वंस आई एम डन, एक दो स्लाइड्स और रह गई हैं, we'll move from that and then I'll answer your questions also. अच्छा, अब कुछ myths हैं लोगों. During my tenure at the stock exchange, every time I've met with potential companies, तो जिस किस्म के responses आते हैं या questions आते हैं या misconceptions हैं, so हमने उनको list down किया. लोग कहते हैं कि जी market down है, तो हम क्या अभी list करें? Is it a good time to list अगर market down है? So, you know, we explain this to them कि market is always cyclical.
ये इन डिस्काउंट रेट पे डिपॉजिट टाइप मार्केट नहीं है कि जी आज मैंने इन्वेस्ट किया तो 10% दूंगा तो या मिलेगा, तो इट इज अ फिक्स्ड वो एवरी डे डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है ये मार्केट, एंड it fluctuates. There is volatility, there is up and down. जितनी डिमांड है, कंपनी ने अच्छे डिविडेंड दिए, कंपनी की डिमांड इंक्रीज हुई, more and more people want to buy and अवेलेबल नहीं है इतने सेलर्स जितने बायर्स हैं, so the price बढ़ जाती. So this is the normal way of the stock exchange business. The aim, आपका एम ये होना चाहिए कि आप तैयारी करें, मार्केट में आए, आप योर कंपनी की प्रोजेक्शन स्ट्रांग हो, यू हैव अ गुड कंसल्टेंट, यू हैव गुड बुक रनर्स, यू हैव अ गुड नंबर ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स हु विल help you get a good valuation for your business. So your business strategy, growth and expansion की should be in place, जिसके ऊपर build होगा आपका पूरा business plan and then your prospectus. So yes, that should not matter really. Do I give away control and decision making power? ये बहुत एक serious concern होता है लोगों का कि अगर हमने आके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया, आपने शेयर्स अवेलेबल कर दिए टू द मार्केट, टू द पब्लिक, तो हमारी शेयर होल्डर, हमारी जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का, वो डाइल्यूट हो जाएगा. सो जस्ट टू लेट यू नो कि मैनेजमेंट कंट्रोल इससे डाइल्यूट नहीं होता, बिकॉज when you give out 20 to 25% of your company's shares to more than 500, more than 1,000 or investors, so that does not take away, that still leaves 75% of shareholding with you, and you would be the major shareholders and the founders of the company. Majority shareholders की होने की वजह से you have the decision making authority. However, जो एक requirements होती हैं कि जी आपने board रखना है and whatever, those you have to comply with. So yes, you do not give away decision making, you do not dilute your ownership. The amount of shares that you do give out in the market is up to 25%. At least 25%. अब आपके ऊपर है, आपने 30% देना है आपने, but minimum 25% होता है. Some companies start with 20% and then 1-2 साल बाद they take it up to 25%. How does my board of directors change after an IPO listing? Generally बहुत सारी companies के अंदर कुछ informal या board of directors होते हैं. जब आप listed company हो जाते हैं, when you apply to list on the exchange, आपको corporate governance की regulations को follow करना होता है. वो regulations नहीं, it's more like a code of corporate governance which you have to comply with. According to that, existing board of directors होते हैं. Board of directors के certain number होना चाहिए, minimum and maximum. उसमें एक requirement है कि जी आपके इतने female directors हों, directors को एक exam pass करना होता है directorship का. So ये जो basic requirements हैं which helps, अगर आपके already board of directors हैं, it will help to improve their level of expertise. It polishes up their learning. Security Companies Act, इन सारी चीजों के बारे में आप एक sort of review कर लेते हैं. बोर्ड में ही ऑडिट कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, नॉमिनेशन एंड रिस्क कमेटी, ये तो ऑप्शनल है. ऑडिट कमेटी एंड ह्यूमन रिसोर्स कमेटी होना जरूरी है. व्हाट इज द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2017? CCG के ऊपर हमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, एंड कंपनीज के CFOs वगैरह, इनफैक्ट ओनर्स को कभी कभार ये कंसर्न भी होता है कि नहीं जी CCG को कंप्लाई करना जरा मुश्किल है. बेशक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाउएवर इट इज अ कंपनी, एक कोड है जिसमें आपने एक सर्टन तरीके से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करना है. तो एक वो डिफाइन करता है कि जी इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, 30%, 33% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो इतने % आपके शेयर होल्डिंग डायरेक्टर्स होते हैं, इतने % आपके कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, CEO और चेयरमैन की पोजीशन अलग हो,
ये बेसिक चीजें हैं। फीमेल डायरेक्टर्स की भी अभी एक रिक्वायरमेंट आई है, ऐड हुई है कि जी आपके पास इतनी एक मिनिमम 1 फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए आपके पास, ताकि फीमेल रिप्रेजेंटेशन हो बोर्ड पे भी। सो ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइंस कि आपकी कंपनी के टॉप लेवल का स्ट्रक्चर क्या होगा। व्हाट इज द करंट डिविडेंड पॉलिसी फॉर पाकिस्तान? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी हम लिस्ट करेंगे कंपनी को तो हमें तो डिविडेंड देना पड़ेगा, और so that is where we explain to them कि कंपनीज एक्ट जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि आपने अगर प्रॉफिट किया एज अ कंपनी, that is when you when you must pay the dividend. You can pay the dividend in the form of additional shares. You can pay the dividend in the form of cash also. And if you do not have any profits, or you have an unrealized gain, for example आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री किस एक लैंड पे है, this is an a sort of property, या आपने किसी और ऑफिसेज में इन्वेस्ट किया हो, या if you're a bank you have branches, so instead of taking those branches on rent you've invested in that. So if you're talking about any investment property जो other investments में classify होती हैं, so if you have an unrealized gain, realized नहीं unrealized gain, so you're not liable to pay dividend on that. अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत आता है, how do I retain control of my company after IPO? How can I restructure my company to assure this? So basically जब आप एक होल्डिंग कंपनी बनाते हैं विद 100, आपने कंपनी ए को लिस्ट किया और आपके पास 2-3 कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल, सो यू क्रिएट अ होल्डिंग कंपनी व्हिच इज इंडिपेंडेंट एंड हैज 100% शेयर होल्डिंग of your own company. You ensure that one entity does not buy majority shares, yeah, you allocate 5% of issued shares to the employees of the company. So you make sure कि जी IPO के बाद भी आपकी जो कंपनी है उसका आपके पास कंट्रोल रिटेन रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेट सिक्योरिटीज के ऊपर ना। लिस्टिंग के अलावा आप एक्सचेंज के ऊपर आके बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, नोट्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकते हैं। They could be sukuks भी if it's a Sharia compliant instrument. For example, Karachi Electric ने sukuk किया issue, बैंक इस्लामी ने सुकूक इशू किए। सो इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यूबीएल बैंक ने कुछ टीएफसीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए थे। सो मुख्तलिफ कंपनीज कम टू द स्टॉक एक्सचेंज, एंड इवन इफ you're a listed company, after that you want more you want to raise further capital, you can go and issue right shares, you can go and issue you can go and you can come to the stock exchange again and have a debt issue with the exchange, जिसके अंदर आप bonds, notes, these are loans to the entity, and stock exchange के through आने से फायदा ये होता है कि if it's a public placement, any individual investor can come through the stock exchange and give you that loan. So you don't go to the bank for that loan, you will come to the stock exchange, you will issue the debt instrument, certificate, TFC, whatever, and you will raise money from the public through the stock exchange. Stock exchange is a platform. इस प्लेटफॉर्म को आप अपनी कंपनी के लिए कितने स्मार्टली यूज कर सकते हैं is your ability. We're here to explain options, provide you options. Consultants available हैं इन सारी चीजों पे आपसे discussions करने के लिए, and I think this is ये एक you should take this into your consideration कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए के थ्रू अपनी कंपनी के लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन या ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग आती है, डेट सिक्योरिटीज के थ्रू कंपनी की शेयर होल्डिंग नहीं आती, सिर्फ एक लोन दिया जाता है कंपनी को जो कि आपने फिर वापस करना होता है। दीज बॉन्ड्स आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स व्हिच प्रोवाइड अ रिटर्न, सो आपने वापस भी करना होता है और आपने इस पे कुछ पीरियोडिक पेमेंट्स भी देनी होती है एज मार्कअप। However,
अनलाइक बैंक लोन आपने कोलैटरल नहीं देना होता है, यहाँ आपने पब्लिक से आके जब आप रेज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन इन्वेस्टर और मैंने आपकी कंपनी का कोई TFC लिया हुआ है, तो 10 साल का मैंने सुकूक लिया हुआ है आपकी कंपनी का, तो मुझे हर साल आप एक सर्टेन प्रॉफिट देंगे। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो मैं एक्सचेंज के ही प्लेटफॉर्म पे सेल की कर सकती हूँ, और दूसरा कोई और, इफ इट्स अ पब्लिक प्लेसमेंट, दूसरा कोई और बायर इस बॉन्ड को रिमेनिंग टेन्योर के साथ, सो अगर 10 साल का बॉन्ड है और 3 साल बाद मुझे जरूरत है, तो उसकी रिमेनिंग टेन्योर 7 years है, सो एनी अदर इन्वेस्टर कैन कम एंड बाय that and take the benefit for the remaining 3 years. So liquidity जिसको कहते हैं वो रहती है इन्वेस्टर के पास। PSX की डेट सिक्योरिटीज में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, TFCs जो कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स की, आप लोगों ने अगर एंग्रो रुपया का नाम सुना हो तो दैट वाज अ टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, यही सुकूक था। सो इस तरह के डिफरेंट और डेट सिक्योरिटीज इशू हुए हैं। गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज होते हैं जो कि T-bills, PIBs एंड अदर्स होते हैं, एंड सुकूक्स होते हैं। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन पब्लिकली एंड प्राइवेटली, मैंने शुरू में इसको थोड़ा सा टच अपॉन किया था। पब्लिक प्लेस्ड डेट वो होता है जो कि जनरल पब्लिक को भी दिया जाए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। सो इसके लिए एलिजिबल ना कौन सी कंपनीज आके स्टॉक एक्सचेंज पे डेट के लिए वो कर सकती हैं? just a second. Any company with a paid up capital and total issue size which is greater than 200 million can come and make a public placement. 200 million public placement के लिए आपको 200 million की requirement है minimum. None of the directors, sponsors or promoters of the company should be on the defaulters list of SECP. अब किसी point पे भी आपने कोई default ना किया हो, आपके directors ने कोई नहीं किया हो, you should, or the sponsors of your company. Then the other option is the private placed debt. Private placed debt is not available for the general public. It is available for qualified institutional buyers. Only those institutions can come and invest in this debt who are qualified for such investment, and general public it's not available for general public. Any public company with a paid up capital and issue size which is greater than 25 million can issue a private debt. None of the directors, again, sponsors and promoters should be on the defaulters list. I think I'll sum it all up by talking about कि listing process के अंदर कौन-कौन से stakeholders involved हैं. The day you decide that you want to come and list on the stock exchange, so आप क्या करते हैं? आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप एक कंसल्टेंट ढूंढते हैं, एक कंसल्टेंट टू द इशू जिसको कहते हैं, उससे आप कनेक्ट होते हैं. यू कैन कम टू द स्टॉक एक्सचेंज, PSX आपको कनेक्ट कर देगा. SECP के कोई 15-16 लोगों की लिस्ट है जो कि अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है. Securities and Exchange Commission of Pakistan is the apex top regulator for the entire non-banking industry. So उसमें insurance companies आ जाती हैं, सारी companies आ जाती हैं, private companies आ जाती हैं, partnerships, sole proprietorships, listed companies, even stock exchange को SECP regulate कर रहा होता है. और SECP ने कंसल्टेंट्स अप्रूव किए हुए हैं, लाइसेंस दिए हुए हैं, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये लाइसेंस, कंसल्टेंट्स के नाम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स PSX की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है लिस्टिंग्स के सेक्शन में. In fact, after this slide, I will take you to that section and I'll also explain that. अब आ जाते हैं कंसल्टेंट. सो हम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप लोगों को कंसल्टेंट्स के साथ. अब आ जाते हैं कंसल्टेंट क्या करता है. कंसल्टेंट विल लुक एट योर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, he or will help you prepare and the IPO prospectus according to the public offering regulations. They will tell you what kind of documents they require, what kind of financial statements they require. They will help you in evaluation of your company, what kind of price can you get. They will help you set the face value
वो प्राइस होती है या जिस पे कोई भी कंपनी अपना IPO करती है पर शेयर प्राइस फेस वैल्यू, उसी पे आपका लेटर ऑन ईयर्स में डिविडेंड भी दिया जाता है. They will help you identify the face value, they'll help you set the floor price of your company, and सारी modeling, financial statements and projections को सामने रखते हुए ये सबसे major role आपका इस वक्त consultant का होता है. And the consultant can say you should go get audited financial statements of this tenure, of this tenure. They will help you examine it, and then you go and to the auditors also. अच्छा, अब इसमें next हो गया book runner. You need a book runner who will help you with the book building software, will manage your bid collection center के वो issue करेंगे सारे NOCs, shares की prices के जो consultant ने justify किए हैं उसकी NOCs वगैरह, ये सारा काम जो है वो होता है book runner का, जो एक entity होती है जो book runner का role play करती है. It ensures कि everything is in compliance with the legal and regulatory requirements. Next, NCCPL. NCCPL, PSX, SCCP तो organizations हैं जिनका रोल शुरू होता है बाद में IPO के वक्त. इससे पहले जो है bankers to the issue. Now, when you have, आपने IPO देखे होंगे, आपको banks designate करने होंगे जिनके through IPO होगा. So they will collect the applications, they will have arranged for the public subscription money in the form of check, demand draft, pay order, and they will release that collected money to your company when the जब NOCs receive हो जाते हैं. Shares registrar ये वो होते हैं जो आपकी shares को transfer करते हैं from you're the issuer to the general public. जिन्होंने IPO में participate किया, जिनको मिल गए shares, उनका ये जो पूरा transfer का process है, that is conducted by the shares registrar. They facilitate the corporate actions, they ensure the dividend payment. So at any point in time, you need to have a shares registrar. कई मर्तबा for बहुत सारी companies के लिए CDC भी as a role of a shares registrar play करता है. CDC पे आ जाए. CDC normally the Central Depository Company of Pakistan is इसका काम तो ये है कि shares depository provide करना for shares to investors and to the brokers as well. But simultaneously इनका electronic settlement का काम होता है. Transactions जो भी PSX पे होती है उसकी electronic settlement share CDC कर रहा होता है. They can play the role of a registrar, they can play the role of the balloter because बहुत सारी public ने apply किया होता है IPO में और फिर ballot होता है and certain people get it, the rest get their money back. Investor account खोलना, investor account services भी CDC provide करता है ताकि investors directly आपकी company के IPO में participate कर सकें. इसके अलावा there's the underwriter. अंडरराइटर वो कंपनी होती है जो कि शेयर्स जो आपकी कंपनी के ऑफर हुए हैं, जितने शेयर्स ऑफर करने हैं, जिस फेस वैल्यू पे करने हैं, दे डू द ड्यू डिलिजेंस फॉर द entire process and they make sure that they're available, they cover the risk also and they make sure कि जी अगर under subscription हुई, आपने expect किया है जी 5,000 shares दिए जाएंगे आपकी कंपनी के और अगर 4,500 हुए तो balance 500 shares हुए, so the underwriter is the one entity that will take up your shares under subscription की सूरत में. अब आते हैं PSX का रोल. जब कंसल्टेंट आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन तैयार करके फुल वो प्रेजेंट करता है और सबमिट करता है टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक लिस्टिंग कमेटी, लिस्टिंग डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि हर लिस्टिंग एप्लीकेशन को देखे, वेरीफाई करे, उसको रिव्यू करे, कंसल्टेंट्स के साथ से जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, गैप्स हैं, क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, वो सारे कंसल्टेंट्स के साथ को कम्युनिकेट करें एंड वहाँ बैक एंड फोर्थ होता है एंड देन दे परफॉर्म द ड्यू डिलिजेंस. वो आपके प्रोस्पेक्टस को रिव्यू कर रहे होते हैं, आपके फाइनेंशियल्स देख रहे होते हैं एंड दे मेक श्योर दैट यू आर फाइन एंड यू देन PSX जब लिस्टिंग एप्लीकेशन को अप्रूव करता है तो SCCP के पास जाती है अप्रूव लिस्टिंग एप्लीकेशन एंड
फाइनल अथॉरिटी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि ड्यू डिलिजेंस करते हैं, फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी फिर से देखते हैं, उनकी भी क्वेरीज आती हैं एंड कंसल्टेंट इन PSX रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेरीज, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स पे फाइनल दे रहे होते हैं अपने स्टेटमेंट एंड कमेंट्स. So that in the whole forms the stakeholders listing process के. Last में NCCPL है, the National Clearing and Settlement Company of Pakistan, clearance and NCCPL का रोल नॉर्मल उसमें ये है कि हर ट्रांजैक्शन जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, चाहे वो IPO की है, चाहे वो बाय एंड सेल ऑफ रेगुलर शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट है, डेट मार्केट है, हर ट्रांजैक्शन की क्लियरिंग, यानी अगर सेल ऑफ शेयर हुई है तो सेलर के पास से शेयर्स लेके बायर के पास से पैसे लेके सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट करना, ये पूरा जो प्रोसेस है जिसको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कहा जाता है, that falls under the ambit of NCCPL. In the IPO या listing process में भी NCCPL plays that same role. Once the IPO is done, they do the clearing and settlement services for the retail investor shares. So in a nutshell, this was a summary of the entire listing process के stakeholders. Hopefully we will try and come to you again with more details on it. ये हमारी जो लास्ट स्लाइड है, इसमें हमने अपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के रीजन हेड्स जो कि लिस्टिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं. अदरवाइज आई एम आल्सो अवेलेबल फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर. You can contact us, respective people in there with their respective details. Thank you very much. I think that's more or less it. Ab I will just try and take the questions that I can. Private equity be treated as joint venture? No, these are two separate methods of financing or raising capital, so they cannot be treated as one. I did explain debt securities in detail. I think I've covered that. ये आपने पहले शुरू में क्वेश्चन पूछा था. Share your PSX webinar channel. हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे वेबिनार्स मीडिया के सेक्शन के अंदर मौजूद हैं. इसके अलावा हमारा YouTube का चैनल का आइकॉन भी हमारे वेबसाइट पे मौजूद है, तो just click on it and look up whatever you want to. We've conducted many webinars investors के perspective से भी. So that's information is there. What is GEM? GEM is a listing board. मैंने उसको समझाया. It stands for Growth Enterprise Market Board. Can I have the PowerPoint of this webinar? I think that webinar will be available in a few days on the website. Please do a webinar on the history of listed companies. Okay, we will look at how we can do that. I think that's an interesting topic. Thank you. Will you make the recording? Yes, hopefully we will. Explain shareholder rights. That is a different and a separate topic altogether. इस पे पूरा एक detailed webinar हो जाएगा. We will look into it. Your comment and recommendation is noted. How many present issue bound a capital listed company their own capital, please? I'm not very clear on this question. How to found director? Okay, directors ढूंढने के लिए हमारी वेबसाइट पे पूरा एक सेक्शन है मार्केट इनसाइट्स में कि सर्टिफाइड ट्रेन डायरेक्टर्स की पूरी लिस्ट है ऑफ IBA, PICG, ICAP, 2-3 ICMA, so LUMS, इन सब की डायरेक्टर्स की लिस्ट अवेलेबल है. You can go there, you can look at the profiles of the directors and you can reach out to them to be. So yes, I think that's a very smart way. In fact, अगर आपकी company, for example, industrial goods में है and you want an expert, and especially आजकल digitization का दौर है, आप वहाँ directors की list में जाके देखें कि जी आपको एक IT का expert चाहिए who will add value to your company's plans. आपको probably कोई sales का या business strategy का आदमी चाहिए. So you can actually identify कि आपकी company चाहे वो listed हो या ना हो, you still
can go and reach out to these available directors and get them on board to help your company benefit. The director or promoter should not be in any, yes, exactly, that's true. How long these process? The process can take from 3 months to 1 year. It depends on how fast you, where do you stand in the readiness level, where do you, how आपका business cycle क्या है, financial year क्या है, आपने consultant से कब किया, and आपने कितना follow up closely काम किया consultant के साथ. How many percentage issue company corporate bond? I'm not very clear about this question. Company कितनी percentage अपने capital का bond issue कर सकती है? कंपनी के परसेंटेज का नहीं होता, उसके अंदर एक सर्टेन 200 मिलियन या 25 मिलियन, दैट इज अगेन वो, इट इज नॉट फ्रॉम अ कंपनी. इक्विटी लिस्टिंग के अंदर आप 20 से 25% मिनिमम, 25% मिनिमम दे सकते हैं, एंड आपके ऊपर आप 30% 40% पे भी जा सकते हैं. फ्री फ्लोट कितना आप रखना चाहते हैं, कितना आप अपने स्टॉक्स अवेलेबल रखना चाहते हैं इन द मार्केट, दैट्स द कंपनीज डिसीजन, बट एक बेस मिनिमम इज 25%. अच्छा, एक और चीज आई वुड टच अपॉन, आई थिंक इज, और तो सब क्वेश्चंस नहीं है हमारी वेबसाइट के ऊपर. अदर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह की और ज़्यादा कंपनीज नहीं है जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो. सो वी विल, आई थिंक, मैं एक ये आपको जस्ट शो यू दिस बिट. ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है. आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट एट द मोमेंट. इज इट विजिबल टू यू? यस. इसमें ये एक सेक्शन है लिस्टिंग विद पीएसएक्स. इसमें सारी डिटेल्स हैं, आपको मिल जाएंगी. मेन बोर्ड, जेम बोर्ड, डेट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट सर्विसेज. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन सबमिट योर इंटरेस्ट एंड लीव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. वील कनेक्ट विद यू एंड गेट बैक टू यू. इसके अलावा रिसोर्सेज एंड टूल्स में हमारी लिस्टिंग की फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, रूल बुक, लिस्टिंग प्रेजेंटेशंस, कंसल्टेंट्स कौन है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज का डेटा, बेसिक एफएक्यूज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी उसके लिए अवेलेबल है. मीडिया सेंटर में आपको वेबिनार्स भी मिल जाएंगे. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल फॉर यू टू यूटिलाइज. I think I will conclude my session here. Thank you very much for your attendance and participation. डायरेक्टर, एक और क्वेश्चन है. डायरेक्टर एग्जाम और सर्टिफिकेशन यहाँ लम से किया जा सकता है, आईबीए से किया जा सकता है, कैप के साथ पीआईसीजी, बहुत सारे इस तरह के, और ये लिस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. अच्छा, व्हाट इज फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स, इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ. other international stock exchanges also. Yes, international companies can also be listed on Pakistan Stock Exchange. If, for example, Unilever is listed, Nestle is listed, so multinationals can come and list on PSX. They can also be listed in other stock exchanges, definitely. जो कंपनी Unilever's UK के अंदर है, वो UK के stock exchange में listed होगी. So it's like that. I think I'll conclude this session at this point. And अगर आप लोग के कोई questions और होंगे तो you can just drop them at info@psx.com.pk. Thank you very much. Allah Hafiz.